respected Principal, Reverend Sister Linsa, Vice Principal, Reverend Sister Mary Augusta, teachers, and all students. Netaji Subhash Chandra Bose explained the desire to die for making India live, inspired each citizen of India to fight for freedom from the British government rule. Independence Day is a national celebration of India that we celebrate to remember the struggles and sacrifices of our martyrs for a long span of 200 years. India witnessed a lot of events that made our freedom fighters concerned for the future of India. The event of Jallianwala Bagh, the faulty land settlements, racial discrimination, endless torture and slavery. We enjoy a better future today because of all efforts and contributions of our freedom fighters. This day makes every citizen of India how we all Indians should glorify India's past, present and future. We should always maintain unity and strengthen our country. So once again, I welcome you. கல்தோன்றி மண்தோன்றா காலத்தை முன்தோன்றிய மூத்த மொழி தமிழுக்கும் எனது தமிழ் மண்ணுக்கும் எனது முதற்கண் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்திய திருநாடு தன் 74வது சுதந்திர தினத்தை ஆகஸ்ட் 15 இன்று கொண்டாடுகிறது. 1947 ஆகஸ்ட் 15 பிரிட்டிஷ் ஆட்சியிலிருந்து விடுதலை அடைந்து விடுதலை நாடானதை குறிக்கும் இந்த நாள் அரசு விடுமுறையாகும். இந்த நாளில் நாடு முழுவதும் தேசிய கொடி ஏற்றப்பட்டு மரியாதை செலுத்தப்படும். இந்த நாளில் இந்திய பிரதமர் தில்லி செங்கோட்டையில் கொடியேற்றுவார். ஒவ்வொரு மாநில தலைநகரத்திலும் மாநில முதலமைச்சர் தேசிய கொடியை ஏற்றி வைத்து நாட்டு மக்களுக்கு உரையாற்றுவதும் நலத்திட்டத்தை அறிவிப்பார். இதுபோல மாவட்ட அளவில் மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர்களும் அரசு அலுவலகத்தில் அதிகாரிகளும் பள்ளி கல்லூரிகளில் சிறப்பு விருந்தினராக வருபவர்களும் கொடியேற்றுவார்கள். நாட்டின் பிரதமர் செங்கோட்டையில் தேசிய கொடியை ஏற்றி வைத்து மக்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் தெரிவித்து உரையாற்றுவார். தேசிய பக்தியுடன் சுதந்திர தினத்தை மகிழ்ச்சியுடன் கொண்டாடி தேசப்பற்றை வளர்ப்போம். வாழ்க இந்தியா, வாழ்க தேசம். Words about our independence. So we are blessed to have a right to speak and to be heard. A right several souls sacrificed their life for us. So let's take a moment to think of their sacrifice and hard work and what they had to pay for the freedom we enjoy. Our forefathers bought our freedom with their sacrifice and hard work. Now we must create a better nation for the next generation. So happy Independence Day. My love for my nation is boundless and my love for my people is endless. All I desire for my country is happiness. Let me be the first person to wish you a happy Independence Day. Let's salute our great nation on its Independence Day. I hope you all feel grateful for the freedom you have and are proud to be the nation you were born to. Jai Hind. स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। आज हम हमारा 64वां स्वतंत्रता दिवस को मनाते हैं। 15 अगस्त 1947 में हम ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता मिला। इस दिन में हमारा प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस दिन अभी भी हमारा प्रधानमंत्री लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। इस दिन भारत के अनेक कोनों में लोगों खुशी और प्रसन्न से मनाते हैं। इस दिन में हम गर्व होना चाहिए क्योंकि हम हमारा स्वतंत्रता आसान से नहीं मिला। इस दिन में हम हमारा वीर सेनानियों को ध्यान में रखना आवश्यक है। हम हमारा स्वतंत्रता दिवस को अनेक रूप में मनाते हैं।
दिन में हमारा वीर सेनानियों की ओर गर्व होना चाहिए, क्योंकि स्वतंत्रता की मूल्य कारण वही है। हम हमारा वीर सेनानियों की धन्यवाद देने में हम हमारा राष्ट्र को धन्यवाद देने के समान है। हम इस दिन को बहुत खुश से मनाया आवश्यक है, क्योंकि स्वतंत्रता एक मनुष्य के लिए बहुत आवश्यक है और स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। सबको मेरा स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। Hello my dear friends of the new world. Today we are celebrating our 74th Independence Day. Be proud to say that you are in an independent country and you are independent. Our country was under the British rule for 200 years, but we did not leave that to continue and we got our independence in 1947. I like to live for the country, serve for the country and even die for my country. I worked along with Mahatma Gandhi in getting independence for our country. As a woman, we should not leave our goals and achievements, because you as a single woman can do everything what even a man cannot do. So be proud to say that you're a woman of India. Today, although we are celebrating our Independence Day, we should think of the persons who died for our independence. Today we are saying that we are independent because of those people who sacrificed their lives for the sake of us to live peacefully. So, have to celebrate this Independence Day proudly by saluting the national flag and all the soldiers and the persons who have sacrificed their lives for the welfare and independence of our country. I am Bikaji Kama. I was one of the most prominent figures in the Indian independence movement. I was born on 24th September 1861 to a Parsi family. I was one of the freedom fighter against British and also an Indian member of parliament. My father was a powerful member in my community. I embraced the equality between men and women. I also gave all my assets to the orphanage for young girls. And as an Indian ambassador, I went to Germany to hoist the national flag. At last, I like to say to you all, Happy Independence Day.